Hi guys, welcome to the Flying Without Limitation. Today we are going to cover the geography's next chapter, that is major domain of the earth. That is chapter number 5 of the class 6 NCERT geography book. तो हम कवर करने वाले हैं विथ नोट्स के साथ। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आप इन नोट्स को बना सकते हैं, साथ साथ में इन पॉइंट्स को लिखते हुए। अगर आप 6th क्लास में हैं और आप अगर समझना चाहते हैं इन कॉन्सेप्ट को सारे, तो मैं पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ फिर नोट्स पढ़ता हूँ, तो दोनों चीजें करता हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विथ लाइफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर which are essential for sustaining life. Okay, the earth's surface is complex zone where the lithosphere, atmosphere and hydrosphere interact together. ओके तो इस चैप्टर में हमें मेन बात यही है कि हमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इन चीजों को समझना है, ये चीजें क्या हैं और क्या होती हैं। तो हम स्टार्ट करें लिथोस्फीयर से। लिथोस्फीयर पहले मैं आपको थोड़ा इसका बता देता हूँ, समझाता हूँ। लिथो मतलब होता है रॉक या स्टोन बोल सकते हो। स्पेयर मतलब जो सराउंडिंग होती है, रॉक से बनी सराउंडिंग होती है, उसे लिथोस्फीयर बोलते हैं। ऐसा आप बोल सकते हो बाय वर्ड अगर इसका मतलब निकालेंगे तो। और लिथोस्फीयर अभी आपको समझ में आएगा जब मैं इसके पॉइंट्स पढ़ूंगा तब। तो फर्स्ट पॉइंट, solid portion of the earth surface on which we live is called the lithosphere. Second point, it comprises the rocks of the earth crust. Crust is the first layer of the earth, we gonna talk about this in later chapters. And the thin layers of the soil that contain nutrients elements which sustain organisms. The earth's surface is divided into continents, लार्ज लैंड मार्सेस। कॉन्टिनेंट्स मतलब क्या होता है? लार्ज लैंड मार्सेस। तो अर्थ का जो लिथोस्फीयर है, जो उसकी लैंड है, उसको बड़े बड़े लैंड मासेस में बांटा गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स। एंड ओशन बेसिन्स, ह्यूज वाटर बॉडीज। ओशन बेसिस मतलब होता है ह्यूज वाटर बॉडीज। तो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। लैंड एलिवेशन इज मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल विच इज टेकन एज जीरो। ओके तो अगर तुम्हें लैंड लेवल जानना है कि लैंड का लेवल कितना है, लैंड मतलब लेवल मतलब कितनी ऊंचाई पर है वो, समुद्र के पानी से कितनी ऊंचाई पे है, तो वो समुद्र के पानी से नापा जाता है। समुद्र का पानी इधर है, समुद्र का पानी जहां पर है, जहां तक है उसे जीरो मानेंगे, और जितना वो ऊपर जाता जाएगा उतने मीटर बढ़ता जाएगा। तो ठीक है, तो सी लेवल को जीरो टेका जाता है। एग्जाम्पल, माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इज 8,848 meters above sea level। तो ये हमारी एनसीईआरटी थोड़ी पुरानी है, तो हो सकता है थोड़ा सा डेटा इसमें कम ज़्यादा हो सकता है। तो एक बार आप चेक कर सकते हो आपके करंट टाइम में कितनी है माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है। एंड द Mariana Trench in the Pacific Ocean is the deepest point at 11,022 meters। ओके तो ये डीप है, 11,022 डीप, मरियाना ट्रेंच इन पैसिफिक ओशन। अब नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? द गैशियस लेयर्स सराउंडिंग द अर्थ फॉर्म द एटमॉस्फेयर। तो जो मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा कि जो गैस होती है अपने चारों तरफ, एयर है जिसने पूरी धरती को चारों तरफ से सराउंड करके रखा है, उसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं। मतलब हवा से बना हुआ है, एटमॉस एयर से बना हुआ है। It contains essential gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide and others necessary for supporting life. Okay, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, स्फीयर मतलब होता है चारों तरफ, है ना, अराउंड, सराउंडिंग। तो हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी से बना हुआ है जो अर्थ का पार्ट, उसकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। The vast area of the earth surface covered by water is known as the hydrosphere. It includes water in various forms such as ice, liquid water and water vapor. Okay, अब नेक्स्ट बात करते हैं बायोस्फीयर। व्हाट इज बायोस्फीयर? बायो मतलब होता है लाइफ स्पेयर, ठीक है, सराउंडिंग, लाइफ से बनी हुई सराउंडिंग। तो आप देखो है, द बायोस्फीयर इज नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर कम टुगेदर सपोर्टिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो ये बोल सकते हैं इन तीनों स्पेयर्स का मिक्सचर है, वो क्या है? बायोस्फीयर। इट इनकम्पसेस diverse ecosystem including forest, oceans, grasslands and more.
ओके, अब बात कर रहे हैं हम कॉन्टिनेंट्स की। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स तो ये आपको पता है लिथोस्फीयर का पार्ट है कॉन्टिनेंट्स। तो कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं हम। एशिया, तो कॉन्टिनेंट्स कितने अपने यहाँ, अपने टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स। तो एशिया पहला क्या है, एशिया largest continent covering about 1/3 of the total land area of the earth। ओके, तो ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया, लोकेटेड इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब नेक्स्ट चीज है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू एशिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरोल माउंटेन्स। ठीक है, यूरोल जो माउंटेन्स है इनसे वो सेपरेट हुआ है एशिया, किससे, यूरोप से है। यूरेशिया, जिसे यूरेशिया बोलते हैं, जो एशिया और यूरेशिया दोनों मतलब जो मिलके बना होता है, ऐसा ऐसी कंट्री या ऐसी जगह जहाँ पे यूरोप और एशिया दोनों मिलते हैं, तो उसे अब यूरेशिया बोलते हैं, यूरोप। अब नेक्स्ट कॉन्टिनेंट आता है आपका यूरोप, स्मॉलर देन एशिया। वैसे सेकंड मतलब नीचे से हम गिनेंगे तो ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉल है, तो ऑस्ट्रेलिया से पहले इसका नंबर आता है यूरोप का। चलो लास्ट में इसकी भी बात करेंगे। लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ एशिया, Arctic Circle passes through Europe, okay, bound by water bodies on 3 sides. One, अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम अफ्रीका की। तो यूरोप की आपने बात कर ली भाई कि क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है इसकी लोकेशन। ठीक है, अफ्रीका आप चाहो तो मैप में भी देख सकते हो। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, तो एशिया के बाद नंबर किसका था, अफ्रीका का। इक्वेटर 0 degrees latitude runs almost through the middle of अफ्रीका। तो आप बोल सकते हो कि इक्वेटर पे कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास थ्रू अफ्रीका। तो हमने पिछले चैप्टर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, इन सब के बारे में हमने पढ़ा, इक्वेटर के बारे में पढ़ा है। तो आप मेरे को बताओ जल्दी से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे कितने डिग्री है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने डिग्री है ना, और बाय इक्वेटर कितने डिग्री है। ठीक है, तो आप देख सकते हो अफ्रीका से ये तीनों चीजें जाती है। ऐसा पूछा जाए कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ये तीनों लाइनें जाती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, तो वो कौन सा कॉन्टिनेंट हो जाएगा, अफ्रीका। अब नेक्स्ट, सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका, सराउंडेड बाय ओशंस एंड सीज। नाइल, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड्स की, नाइल फ्लोज थ्रू अफ्रीका। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्टिनेंट आ रहा है अपना नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ओके, तो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया एशिया, सेकंड हो गया अफ्रीका, देन थर्ड इज नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, linked to South America by the Isthmus of Panama. Okay, located entirely in the northern and western hemisphere, surrounded by the Atlantic, Pacific and Arctic Ocean. Atlantic, Pacific and Arctic Oceans. Okay, three oceans. अब नेक्स्ट बात करें हम साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका क्या है, lies mostly in the southern hemisphere. Okay, सराउंडेड बाय द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो ये भी दो ओशन, अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, मोस्टली, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, मतलब ज्यादातर इसका सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, थोड़ा बहुत नॉर्दर्न में भी पड़ता है। एंडीज, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, runs from north to south, where in South America, contains the Amazon, the world's largest river। ठीक है, तो Amazon जो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है वो भी साउथ अमेरिका में है। लार्जेस्ट है, नॉट लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट इज नाइल इन अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। अब नेक्स्ट है लास्ट कॉन्टिनेंट, नहीं नॉट लास्ट, लास्ट सेकंड हेयर इन टर्म्स ऑफ साइज, इट इज लास्ट। ओके, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, surrounded by oceans and seas, okay, referred to as an island continent, Antarctica। अब लास्ट कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, located entirely in the southern hemisphere, a huge continent with the south pole almost at its center। ओके, तो साउथ पोल पे पड़ता है कॉन्टिनेंट, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता होगा, बोल सकते हो पूरा का पूरा, और साउथ पोल इसके सेंटर में पड़ता है। Permanently covered with thick ice sheets,
no permanent human settlements, but many countries have research stations, including India's Mathuri and दक्षिण गंगोत्री. ओके, तो दो स्टेशंस है इंडिया के, दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री, वेयर इन इन अंटार्कटिका. ओके, अब नेक्स्ट बात करें हम हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर में आपकी जो इंपॉर्टेंट बॉडी चीजें होती हैं. द अर्थ इज ऑफन रिफर्ड टू एज अ ब्लू प्लैनेट because more than 71% of its surface is covered with water, while about 29% of it consists of land. Okay, the hydrosphere comprises water in all its forms, including oceans, rivers, lakes, glaciers, underground water, and water vapor in the atmosphere. अब बात कर रहे हैं हम ओशंस की. इसके अंदर जितने भी ओशंस है, तो नाउ वी टॉक अबाउट ओशंस. Oceans are the major part of the hydrosphere and are interconnected. Okay, they are always in motion, exhibiting three chief movements. तो मतलब मोशन में रहते हैं, मतलब हमेशा ओशन में कुछ हलचल रहती है. या तीन टाइप की मूवमेंट्स रहती है ओशन में. वेव्स, वेव्स आपको पता है, वेव्स, टाइड्स, TIDES, and ocean currents. Waves, tides, and ocean currents. We gonna talk about in later chapters in details in class 6th ending or class 7th. Tides, about waves, about and about ocean currents. The five major oceans in order of their size are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Southern Ocean, and the Arctic Ocean. So these are the top five oceans. Okay, in terms of their size. Okay. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है पैसिफिक ओशन. अब पैसिफिक ओशन के बारे में देखते हैं. द लार्जेस्ट ओशन कवरिंग 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस. मरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. कितने मीटर्स की मरियाना ट्रेंच? हाउ मेनी मीटर्स इज इट? कमेंट, फास्ट कमेंट. ओके, it is 11,022 kilometers. Is located in the Pacific Ocean. Okay, it is almost circular in shape and surrounded by Asia, Australia, North America, and South America. अब नेक्स्ट बात आ रही है अपनी अटलांटिक ओशन. व्हाट इज अटलांटिक ओशन एंड वी गोना शो इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. The second largest ocean, characterized by S shape. Okay, like Pacific Ocean characterized by circular shape, and it is by S shape, flanked by North and South America on the western side and Europe and Africa on the eastern side. The indented coastline, providing natural harbors and making it the busiest ocean in terms of commerce. Okay, so which is the busiest ocean in terms of commerce in the world? It is the Atlantic Ocean. Next आ रही है, बात आ रही है Indian Ocean, named after India. Okay, the only ocean that is on a country's name. Okay, named after India, and its shape is almost triangular, bounded by Asia in the north, Africa in the west, and the Australia in the east. अब next बात आ रही है Southern Ocean. Encircles the continent of Antarctica and expands northward to 60 degrees south latitude. अब बात आ रही है Arctic Ocean. Located within the Arctic Circle and surrounds the North Pole. Okay, so it is also the coldest or cold, connected to the Pacific Ocean via the Bering Strait, bound by the northern coast of North America and Eurasia. Water distribution. Now, next point is water distribution. How is water distributed? More than 97% of the Earth's water is found in the oceans, and it is
too salty for human use. We cannot use this because it is salty actually. A large proportion of the rest is in the form of ice sheets, glaciers, or underground water. Only a small percentage is available as fresh water for human use. Okay, so we have very less water for use. Now we talk about atmosphere. Atmosphere. The Earth is surrounded by a thin blanket of gas called the atmosphere. We already talked about atmosphere. What is it? So I'm not explaining this. I'm only reading the atmosphere, which is essential and protective aspect of the planet. The atmosphere provides us with the air we breathe and shields us from the harmful effects of the sun's rays. Composition and layers of the atmosphere. Now we talk about layers of the atmosphere. The atmosphere extend up to a height of about 1,600 kilometers. It is divided into five layers based on composition, temperature and other properties. Okay, the composition, temperature and other properties में five layers में divide किया गया है. The troposphere, the stratosphere, the mesosphere, thermosphere, and exosphere. Okay, so now we talk about one by one. It is something extra for UPSC aspirant. If you are in sixth class, you can skip this information. Troposphere, closest to the Earth's surface, expanding up to about 12 kilometers. Okay, so up to 12 kilometers, it's troposphere. Here we have given what happened in this layer. Weather phenomena occur in this layer. The temperature decreases with altitude. Okay, so in this layer, next layer is stratosphere. Now we talk about stratosphere. What is this? Lies above the troposphere, reaching about 50 kilometers. It is about 50 kilometers in height. Contains the ozone layer, which absorbs the harmful ultraviolet UV radiation from the sun, protecting life on the earth. Okay, so this is a work of stratosphere. It is most important sphere because ozone layer found in this layer. Mesosphere, above the stratosphere, extending up to about 80 kilometers. Temperature decreases with altitude, making this layer extremely cold. Oh, this is the coldest sphere maybe. Next is thermosphere. This is hottest actually. Thermosphere expands up to the about 500 kilometers. Temperature decreases with altitude due to absorption of solar radiation. Next is exosphere. What is this? The outermost layer expanding beyond 600 kilometers into space. Transition between the atmosphere and outer space happened in this layer. अब next point is composition of the atmosphere. Composition कैसे हुआ है इसका? Mainly composed of nitrogen 78% and oxygen 21%, making up about 99% of clean dry air. That is with nitrogen and oxygen 78% and 21%. It is 91%. 99% actually. Other gases like carbon dioxide, argon, and others comprise 1% by volume. Okay, now other gases are 1% in the atmosphere. Oxygen is essential for breathing, while nitrogen supports the growth of living organisms. Carbon dioxide, though present in small amounts, helps in maintaining the planet's form and is vital for plant growth. Density, pressure, and wind. We talk about density, pressure, and wind. The density of atmosphere decreases with height, being highest at the sea level and decreasing rapidly as we move upward. Density means मतलब आप बोल सकते हो जो प्रेशर लगाती है एयर हमारे ऊपर as we move upward. ठीक है, तो upward हम जैसे अब ऊपर जाते रहते हैं वैसे ही टेम्परेचर कम होता जाता है, एयर प्रेशर कम होता जाता है. Climbers face breathing problems at high altitudes due to the decrease in air density.
necessitating the use of oxygen cylinders. Temperature also decreases with altitude. Atmospheric pressure varies from place to place, with some areas experiencing high pressure and others low pressure. Like if you go to the equator region, it is not high pressure; it is low pressure area. Air moves from high pressure to areas to low pressure areas, creating winds. Okay. अब next बात आ रही है बायोस्फीयर की. What is it? The domain of life. It is the domain of life. The biosphere is a narrow zone where land, water, and air come together, supporting all forms of life unique to our planet. We already talked about this. It contains a wide variety of organisms, ranging from microbes to bacteria, large mammals, all interconnected and dependent on each other for survival. Organisms in the biosphere. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना organisms in the biosphere. Organisms in the biosphere can be broadly categorized as the plant kingdom and the animal kingdom. All living beings, including humans, are linked to the biosphere for their survival and well-being of the earth. Okay, you can say this. Interaction between domains. Okay, the three domains of the Earth, lithosphere, atmosphere, and hydrosphere, interact and influence each other in various ways. If there is no hydrosphere, if there is no atmosphere, then how can be biosphere? Guys, think about it. Human activities like wood deforestation for wood, and agriculture can lead to soil erosion. Soil erosion मतलब मिट्टी खराब कर देते हैं यार. Natural calamities like earthquakes can alter the earth's surface, causing submergence or land changes, as seen in recent tsunamis. Impact of human activities. ठीक है, तो this is the topic, impact of human activities. A discharge of waste material into lakes and rivers can pollute water, making it unsuitable for human use and harmful to other forms of life. Emissions from industries, thermal power plants, and vehicles can pollute the air, leading to an increase in global temperature known as global warming. It is essential to limit the use of earth resources to maintain the balance of nature among the domains of the lithosphere, atmosphere, and hydrosphere. Guys, this is our chapter. We have completed the another chapter of class 6th geography. तो अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है और ऐसे चैप्टर्स देखना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और साथ की साथ वीडियो को लाइक जरूर करना है यार, इससे बड़े मजे आते हैं. ठीक है, ओके गाइस, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय.